Hello, story time. Yes, story. In the village of Messina in Sicily, in Italy it is exactly, one person came home coughing. His condition was so bad, he was running high fever. His condition was so bad that his wife and children were shocked to see him. Soon they noticed that black bruises were appearing on his all over his body. काले फोड़े निकल रहे हैं उसके जिस्म पर, सारे जिस्म पर, बुखार, खांसी. The children and the wife took great care of him the whole night. But the next day that person died. And his wife also died. Then his children also died. You must be thinking that why they were not going to hospital. Actually it is 650 years ago, and it was Middle Ages in Europe, and in Middle Ages in Europe there was no knowledge, no hospitals, no doctors, no science, no book. There was only one book, that was Bible, and there was only one thing, that was church. They ran to church. Father, that person had a horrible death, black death. His body is all over having black bruise. It is horrible death. Father, what is that? Father said that he must have done some sin. जरूर उसने कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए उसको ये ब्लैक डेथ आई है. काला गुनाह किया होगा तो काली मौत आई है उसको. Father, no, his wife also died. She also had the sin. उसने भी गुनाह किया होगा. No, Father, the innocent children died. The parents' sin got the ill-fated children. पेरेंट्स के गुनाह की वजह से वो बच्चे मारे गए. तुम ऐसा करो, तुम अपने गांव में ये हॉली मदर ऑफ गॉड, इनका स्टैचू लेके जाओ, सब ठीक हो जाएगा, नहुसत ख़त्म हो जाएगी गांव से. वो हॉली मदर ऑफ गॉड का स्टैचू लेकर अपने गांव गए. विलेजर्स मरना शुरू हो गए, गांव वाले मरना शुरू हो गए. द विलेजर्स स्टार्टेड डाइंग द सेम डेथ. दे रैन अगेन टू द पॉप. Father, we are dying horrible death, black death. ओ बदबख्तों, क्या गुनाह कर बैठे हो तुम लोग, जो इतनी भयानक मौत मर रहे हो, खुदा के कहर को आवाज़ दे बैठे हो. दूर हट जाओ मेरी नज़रों से, मैं खुद जाऊंगा, जाके देखूंगा. The villagers were happy that now Father is coming himself. He will see that जो हमारे गांव पे साया आया है ना, ये जिस चीज़ का भी साया उसको Father खुद देख लेंगे. Father came and he also died the same death. It is not a joke. ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये कोई जोक नहीं सुना रहा. It is a horrible incident of human history. The whole village died. The whole village died. Villages after villages were dying. Nobody knew the answer. The same story again. People are going to church and church is saying it is their sin. Your sin, your sin. Father, not. It is not the sin. Sin is not the reason. Innocent children are dying. बच्चों ने क्या गुनाह किया होगा, एक दिन का बच्चा, उसने क्या गुनाह कर लिया होगा, that he is dying this horrible death. They had only one answer, that it is sin, until they died themselves. जब तक चर्च वाले खुद नहीं मर जाते वो यही कहते रहते, it is sin, God is punishing you. It was not only the village of Messina, it was not only Italy, it was not only Europe. From England to China, Russia, people were dying, waves after waves, horrible death during 1347 to 1750. 400 years. How many people died? Not hundreds, not thousands, millions. 75 million to 200 million people died of that horrible death. And nobody knew the reason. As we are talking about the Europe, who could tell them the reason?
in the Middle Ages? Only church. And church said they know the reason. And what was the reason? Sin. But that reason was not working for them. People left the church and turned to science. People left the church, turned to science and discovered the sinner. लोगों ने चर्च छोड़ दिया, साइंस की तरफ गए और साइंस में उन्होंने डिस्कवर किया कि गुनहगार असल में कौन है. और वो गुनहगार इंसान नहीं थे, चूहे थे. और उन चूहों ने 10-20 करोड़ लोग मार दिए. चूहों के फैलाए हुए वायरस से लोग मर रहे थे और 400 साल तक चर्च उनको कह रहा था कि तुम लोगों के गुनाहों की वजह से तुम मर रहे हो. आपको मालूम है कि इस वाक़े में 1665 में लंदन में 1 लाख लोग मरे. 1771 में मॉस्को में 1 लाख लोग मरे. सो व्हाट वाज द आउटकम? रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि लोग जो हैं वो चूहों के हाथों भयानक मौत मरने से बच गए. ह्यूमन बीइंग वॉन द वॉर अगेंस्ट द रैट्स एंड द बैक्टीरिया. That was because of science. There was another result of that. What was that? People in Europe, they thought that the reasoning of the church was wrong and reasoning of the science was correct. And from here, an age of enlightenment started in Europe. This is called age of reason. यहाँ से यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू हुआ. लोगों ने रीज़न को डिस्कवर करना शुरू किया. दैट इज़ एग्जैक्टली साइंस. नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ब्लैक डेथ? द नेम ऑफ दिस डिजीज इज प्लैग. इट्स नेम इज प्लैग. ओके, प्लैग वॉज नॉट द ओनली रीज़न फॉर द एज ऑफ एनलाइटनमेंट. सिर्फ इस वजह से एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजनिंग नहीं आई यूरोप में. देयर वर मोर रीजन्स. चर्च एट मैनी ओकेजन कुडंट सेटिस्फाई द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, चर्च कहती थी कि अर्थ इज फ्लैट एंड सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है. और साइंस ने, गैलीलियो द इटालियन साइंटिस्ट, ही created a telescope and proved that sun is not revolving around the earth. It is the earth that is revolving around the sun. So there were so many times, it is not the only one or two things. There were so many times the church was found wrong on many obvious facts. Besides, scientists argued that everything can be proved. Everything in the world can be proved with science and mathematics. There is no need to be superstition. हर चीज़ में जो है वो वहम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. चीज़ों को मैथ्स और साइंस के ज़रिए प्रूव किया जा सकता है. न्यूटन even proved with his law of gravity, he even proved why things fall. Why things fall down. दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब उसके सर के ऊपर आके गिरा, तो उसने ये प्रूव करने की कोशिश की ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों आया. तो उसने प्रूव किया क्यों आया है. एंड व्हेन द एज ऑफ रीजनिंग स्टार्टेड, पीपल स्टार्टेड आस्किंग द रीजन ऑफ द रूलर्स. व्हाई यू आर द रूलर? हाउ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट? हाउ यू कैन डू एनी अनजस्ट थिंग यू वांट? हाउ यू कैन ओवर रूल द पीपल? आप लोगों के ऊपर हर जुल्म क्यों कर सकते हो? आपको ये हक कैसे है कि आपका ख़ानदान या आपका शजरा नसब, इसको खुदाई हक कैसे मिल गया हुक्मरानी का? बिकॉज इट वॉज द एज ऑफ रीजन, सो पीपल आर नाउ आस्किंग द क्वेश्चंस. एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर रूलर्स टू डू वट एवर दे वॉन्टेड, बिकॉज फर्स्ट दे वर यूजिंग नेशनलिज्म एंड रिलीजन. पहले तो वो नेशनलिज्म और रिलीजन को इस्तेमाल करते थे अपनी मनमानी करने के लिए. Because the church grown weak, they did not have that tool in their hand, and people started asking questions. Philosophers started presenting new ideas for the rule in the society. For example, there was one philosopher from England. His name was Locke. Locke said it is not whatever the ruler wants. It is a contract between the ruler and the people.
लोगों और रूलर के दरमियान, हुक्मरान के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है असल में. एंड व्हाट इज दैट? दैट the people will obey him, but he should provide justice. उसने इंसाफ फराहम करना है. If he is not doing that, then people should not obey him. People should not pay him taxes. Another philosopher, for example, his name was Rousseau, very famous philosopher. Rousseau said that there should be a general will. General will means wish or desires of the majority of the people. That should be the law. जो majority of the people चाहते हैं वो कानून हो, और वो कानून फिर रूलर पे भी अप्लाई हो. Voltaire said that unjust ruler is an evil and we must destroy the evil. बुरा हुक्मरान जो है वो भी एक उतनी ही खतरनाक चीज़ है जितनी वो ब्लैक डेथ है. तो ख़तरनाक चीज़ों को, बुरी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए. सो पीपल स्टार्टेड रेजिंग द वॉइस. इट वाज द एज ऑफ रीजनिंग. हर कोई भी शख्स अपनी मनमानी करने की पोजीशन में नहीं था. नाइदर द चर्च नॉर द रूलर्स. So, in this lesson we have learned that in 17th and 18th centuries, people in Europe left following the church blindly, and they took interest in science and reasoning. They also started to unite and think how they should have better rulers and get rid of the bad rulers. This is called the age of reason or enlightenment in Europe. और इन सारे रेवोल्यूशन से गुजर के ही यूरोप आज का यूरोप बना. मिडिल एजेस से निकला और आज का यूरोप बना. बाय.